Badaun, Uttar Pradesh, one of the fastest growing districts in the state. However, a short distance from the main town in rural Badaun lies a sad reality. According to the World Health Organization, it was the world's worst affected polio district, with 187 polio cases reported between 2005 and 2010. Hygiene conditions were poor. Open defecation was practiced in many villages, and a survey in July 2010 found that there were 49,000 dry latrines in Badaun's nearly 500 villages, all cleaned by manual scavengers. June 2011. Less than a year after the survey, almost all dry latrines have been converted into pour and flush toilets. Many who practiced open defecation earlier have now built toilets in their homes. There have been no new polio cases reported here since January 2010, and over 2,200 families of manual scavengers have been rehabilitated. This is a story of change, of the kind even Badaun is unlikely to have seen in its long history. How did it happen? What do those living the change feel about it? पक्की लैट्रिन बनवाने में हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे बदबू नहीं आती है और बीमारियां इससे काफ़ी दूर हो जाती हैं। मक्खी का शिकायत नहीं है, कोई बीमारी का ऐसी शिकायत नहीं है, खास करके कि जैसे हरदम बीमारी है वो कुछ नहीं है। और मतलब सफाई सुथराई अपने हाथ से अपने आप कर लेते हैं। पहले तो हमें बहुत बुरा लगता था, हमारे हाथों पैरों में खुजली पड़ती थी, पैर हमारे ख़राब हो जाते थे, और अब हम बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले गांव के लोग बहुत घृणा करते थे और अब नहीं करते हैं इतनी। अब तो इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं। The moving force behind this change is Amit Gupta, the former district magistrate of Badaun. पूरे उत्तर प्रदेश में जो 66 हाई रिस्क ब्लॉक डिक्लेयर किए गए थे पोलियो के लिए, उसमें से 16 ब्लॉक बदायूं में थे, और पल्स पोलियो अभियान लगातार चलाए जाने के बाद उतना केसेस में सुधार नहीं आ पा रहा था। पहले तो इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब ड्राई लैट्रिन का मैंने देखा कुछ गाँव में जाकर, जहाँ बहुत संख्या में ड्राई लैट्रिन थी, तब मुझे वास्तव में समझ में आया कि बदायूं में जो पोलियो का उन्मूलन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और विभिन्न सीजनल बीमारियाँ जैसे डायरिया आदि होती है, इतनी प्रकार की मक्खियाँ होती हैं जो कई बीमारियों का वाहक होती हैं। इन सब का एक ही कारण है शुष्क शौचालय बहुतायत में होना। इसके अतिरिक्त मैला ढोने की प्रथा जो कानून द्वारा निषिद्ध कर दी गई है काफ़ी समय से, वो भी प्रचलित थी। तो मैंने ये पाया कि जब तक शुष्क शौचालय को हम लोग पूरी तरह समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक वास्तविक सुधार लाना संभव नहीं है। The campaign began by creating awareness about the ills of dry latrines. A grassroots network of village motivators was created to support the initiative, with more than one motivator appointed per village. गंदी चीज हर किसी को बुरी लगती है। एक तो सबसे पहली चीज उससे बीमारियां होती हैं, जैसे अभी कि मैंने बताया पोलियो। SMNet is a grassroots network with more than 5,000 field mobilizers in Uttar Pradesh to ensure that children are vaccinated against polio at every vaccination round. These mobilizers went door to door, convincing people to convert their dry latrines to pour and flush toilets. At the same time, community-level action was also initiated. आपकी इच्छा हो तो आप तोता वाला बनाइए, आपकी इच्छा हो तो आप सेप्टिक टैंक वाला बनाइए। हमने अधिक से अधिक संख्या में मीटिंग की गांव में, लेकिन साथ साथ लोगों को जो शुष्क शौचालय निषिद्ध करने का कानून है उसके बारे में भी जानकारी दी गई, और इस संबंध में संपूर्ण स्वच्छता अभियान से वॉल राइटिंग कराई गई, जिससे यदि कोई जागृति के माध्यम से नहीं मानता है तो उसे वास्तविक कानून की जानकारी हो सके, और हर प्रकार से हमारा प्रयास हो सके कि उसे किसी तरह से कन्विंस करें कि वो शौचालय कन्वर्ट कर ले।
Motivators knew it would take a lot to change age-old practices. They went prepared. हमारे सामने चुनौती थी कि क्या 1500 में एक शौचालय का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम में जाकर 1-2 शौचालय बनाकर कि किस तरह से आप अपने पुराने ढांचे को, जिसमें आपका शुष्क शौचालय था, सिर्फ उसके जो बैठने का स्थान है उसको तोड़कर उसकी जगह पर एक सीट बिठा दी जाए और उसके बराबर में ही एक सोक पिट, सोख्ता गड्ढा जिसको कहते हैं, वो 200 ईंटों का बना दिया जाए। तो इस तरह से हम 1500 में एक शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। While best practices were followed in the conversion and construction of toilets, the wishes of the villagers were always respected. लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि हम सेफ्टी टैंक बनवाएं तो हम यही कहेंगे आप उसको बनवा लीजिए। This sensitivity to local perceptions helped speed up pour and flush toilet construction in Badaun. At this point, Amit Gupta felt that government functionaries could also help add momentum to the movement. This effort was a huge success. Till date, nearly 8,000 government functionaries have had pour and flush toilets constructed in Badaun. Every one of these measures has done its bit to help Badaun convert more than 47,000 dry latrines into pour and flush toilets in less than a year. But perhaps the most important aspect of this radical social change in Badaun was mobilizing the Scavenger community to convince this marginalized group that their lives could change. Drastic measures would be needed. पहली बार डीएम साहब आए तो ये लगा कि पता नहीं क्या कहेंगे हमसे। फिर बोले कि तुम गांव से अपनी डलियां लेके आओ। फिर उन्हें हमने इकट्ठा किया सब डलियों को और आग लगवा दी। Having symbolically burnt their past, the new dawn of hope also brought many questions for the community. Most important among them, how would the community now earn a living? The administration had answers for this too. Many were given subsidized loans to buy buffaloes. The milk would be bought directly by the government's Dairy Development Board. Others were given work under the National Rural Employment Guarantee Scheme or trained in alternate skills. They were also provided with government's below poverty line cards for subsidized rations. Children from the community were also given special scholarships to study in government schools. काम छुटको तो वो बढ़िया है। अब आपके पास बैठेंगे, दूसरे के पास बैठेंगे, कोई जा ना कह सकता है कि जिम्मेदारी इतरानी आ रही है लकट जा। हमें बहुत आराम मिलेगा, साफ सुथरे रहेंगे, सब लोग में मिल के रहेंगे हम। और हमारे घर में भी पक्के शौचालय बने हुए हैं, इसमें भी हमें फ़ायदा हो गया। मेरी जानकारी है कि जनपद बदायूं का अभियान से कुछ सीखते हुए या यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर अगल बगल के 7-8 जिलों में इस प्रकार की वर्कशॉप हुई हैं जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार का अभियान शुरू किया गया है सभी लोगों को जोड़ते हुए। तो निश्चित रूप से ये अन्य जिलों में भी कार्य इस प्रकार का किया जा सकता है, क्योंकि जो भी कार्य किया है वो उपलब्ध संसाधन जो हमारे पास, चाहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान हो या सरकार की विभिन्न योजनाएँ हों, उन्हीं योजनाओं में जो भी उपलब्ध संसाधन है उन्हीं को लेते हुए और लोगों को जोड़ते हुए इस अभियान को किया गया है। तो इस प्रकार का कार्य कहीं भी किया जा सकता है और आगे किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। Having partnered the administration in Badaun through this year-long process of change, UNICEF too is committed to replicating it across the state of Uttar Pradesh. UNICEF believes that the conversion of the dry latrines into pour flush toilets is a critical public health intervention that cannot fail. It is an important step on the road to polio
eradication. We believe that restoring the human dignity to the manual scavengers is at the heart of the principles advocated by UNICEF. This is why we hope that the work will continue, led by the government, to ensure that there is no district in Uttar Pradesh that has manual scavenging.